I am the first person to go to the US in my entire family. This is also the first time I'm traveling in business class. Sounds like a dream, right? 18-year-old Ishan would have never imagined this as he was posting his first YouTube video back in 2020. I was born in Khandwa, Madhya Pradesh, and being able to do this independently is huge for me. No papa ka paisa, no generational wealth. But you know what the crazier part is? I spent 45 days in America for free. Yes, that's right. I'll tell you how I did it by the end of this video. I once read a tweet which said, "Padega India, tabhi to badega America." Recent study shows how the smartest people of India end up shifting to America for better research opportunities, better capital funding, better quality of life, a better future for their kids. Indians are among the top immigrant populations of America. Sunnyvale in Bay Area and Jersey City feels like I am back in an Indian neighborhood. But ऐसा क्या है अमेरिका में? यही जानने के लिए I traveled to the US on Virgin Atlantic's upper class experience. 10 hours from India to London and then 12 hours more from London to San Francisco. I think we've all grown up watching American movies, TV shows, Hollywood actors and singers, 2000s की शाहरुख खान की मूवीज़, न्यूयॉर्क सिटी की स्काई स्क्रेपर्स, लॉस एंजलिस की चमक धमक, सैन फ्रांसिस्को का बिल्डर हैकर इकोसिस्टम. US is the world's greatest economy. The internet, the GPS, airplane, telephone, light bulb, motion picture. These were all the inventions and more which came from this country. After spending over 45 days in the country, I think there are three main reasons why. Number one, there's massive appetite for risk. If there's one place where even the most crazy ideas stand a chance, it's here. There are so many people waiting to invest in your idea and take a bet only if you know how to be in the right spot at the right time. Number two, there's no judgment for what you do with your life. They don't despise wealth. Poverty is a choice in US. Is what I heard while talking to a Uber driver. You see, they don't look down on delivery boys, cab drivers, the barber, the shopkeeper, the barista. I've heard so many stories of people who went from being homeless to running their own business through hard work and opportunity. And hence, the third reason, I think, is the fact that it's the mecca for the smartest people in the world. A players want to hang out with other A players. America understood this long ago and made it possible for the smartest in tech and medicine to come and live here. I met a 20-year-old indie hacker from France who had no friends in his own country who would develop tools and ship. He felt really lonely, but then he came to San Francisco and felt like home. There's a reason it's called the land of opportunity. But of course, make no mistake, it's not perfect, not even near. They are dealing with their own problems: drug abuse, gun violence, homeless people, expensive education, healthcare, inequality. But for many of the people I met, it's the place to make it in life. And now the elephant in the room. How did I travel to US for free? Well, I did spend over $8,000 in 45 days in the US, including hotel, food, Uber, flights, shopping, etc. But I made even more than that during my trip. But how exactly? Remember that marketing company I run called MarketUp? Yes, I closed multiple clients in the US, did tens of meetings with founders in San Francisco and New York City, and sold them YouTube management. It's a program we offer to help businesses build their own YouTube channels. Here's exactly how I did if you're curious. एक महीना हमने पूरा मेरे और मेरे को-फाउंडर ने बैठ के कंपनीज छांटनी शुरू करी. हमने ऐसी कंपनीज निकाली जो AI में होंगी और जो इस स्टेज में होंगी, सीड फंडेड से सीरीज A तक की होंगी. एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइक अ डेटाबेस ऑफ ऑल ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग इन दीज कंपनीज. हमने उनके सारे चैनल्स एनालाइज करे एंड हमने उनको फिर ईमेल भेजा कि आई एम अ क्रिएटर, आई हैव बिल्ट दिस मच ऑफ अ चैनल एंड आई रन दिस कंपनी कॉल्ड एज मार्केटअप, जहाँ पे हम लोग कंपनीज को हेल्प करते हैं विद सोशल मीडिया. वीव हेल्प्ड 40 companies generate billions of impressions. And so I am coming to SF and was researching for new companies, came across yours. Would love to meet you for coffee and chat more about how is it going.
It's just a very simple open-ended email. ये हम बहुत सारी कंपनीज को भेजते हैं, इनमें से कुछ कंपनी रिप्लाई करती हैं, फिर हम फॉलो अप भी करते हैं, फिर उसमें से कुछ कंपनी और रिप्लाई करती हैं, एंड देन वी सेट अप मीटिंग्स विद ऑल ऑफ देम, राइट. सो दैट इज हाउ दैट बेसिकली वर्क्स. फिर जब मैं लैंड हुआ तो आई हैड लाइक प्रीटी मच ऑल ऑफ माई डेज बुक्ड. सो 30th of July से 9th of August तक एवरी डे आई हैड एटलीस्ट 3, 4, 5 मीटिंग्स. तो उनको जाकर के बैठा, उनके साथ बात करी कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से हो. कई सारे लोग इंडियन थे तो वो इंडियन कनेक्ट बहुत आ जाता है. मैंने इतना ट्रैवल किया है तो कोई बोलता है मुंबई से, मतलब मैं भी मुंबई से ही हूँ, राइट. कोई बोलता है दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड सो मच इन ऑल द सिटीज, तो आई कैन रिलेट वेरी वेल. सो वो करके उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ. मैं जैसे आस्क किया आप क्या कर रहे हो, कैसे बिल्ड कर रहे हो, एंड देन दे ऑटोमेटिकली से कि अच्छा आप कैसे हेल्प कर सकते हो मेरे को. सो आई जस्ट आस्क वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन उसके अंदर, एंड उससे आई अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है यहाँ पे इस क्लाइंट को हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं. एंड वो ऑटोमेटिकली आस्क कि अच्छा हमारी ये प्रॉब्लम है. बिकॉज द बेस्ट थिंग इज सेल्स में ये एक बहुत बेसिक रूल है कि यू नेवर टॉक मोर देन 10-20% ऑफ द टाइम. अगर 1 घंटे की टॉक में आप ही 40 मिनट बोल रहे हो तो आपका कट रहा है. सो आपको क्या करना है, आप उसके बाद बैठो सामने वाले बंदे से, उससे क्वेश्चंस पूछो, राइट. वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बताएगा आपको, राइट, अगर प्रॉब्लम है जेन्युइनली. एंड दैट इज द बेस्ट क्लाइंट, क्योंकि अगर वो इतनी बार प्रॉब्लम को मेंशन कर देगा तो आप जब सोल्यूशन बताओगे तो ऑटोमेटिकली ही विल जस्ट ग्रैब इट ना. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी. तो आई एट मैक्स आई एम टॉकिंग फॉर 15 minutes फॉर द होल 1 hour कॉन्वर्जेशन. 10-15 मिनट मैंने बात करी, एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, अच्छा ये कैसे किया, वो कैसे किया, एंड देन दे ऑटोमेटिकली आस्क क्वेश्चंस. तो उस तरह से पहली कॉल होती है जो मैं करता हूँ खुद. ये मैंने कॉल कर दी, देन दे आर लाइक अच्छा ठीक है मेरे को और डिटेल्स भेजो तुम्हारी कंपनी के बारे में, कैसे करते हो, व्हाट डज इट लुक लाइक. वी लाइक विल सेंड यू 1 page डॉक्यूमेंट नोशन में बना करके, एंड विल राइट डाउन कि हम कैसे काम करते हैं आपके साथ. तो वो मेरी टीम करती है. मेरा को-फाउंडर बैठा है बैंगलोर में, ही इज़ अ रूममेट फ्रॉम माई ओन कॉलेज, एंड ही वर्क्स ऑन द एग्जीक्यूशन, ऑन द ऑपरेशंस पार्ट. ही हैंडल्स ऑल ऑफ दैट. सो आई विल गो बैक टू हिम एंड आई विल टेल हिम कि अच्छा ये क्लाइंट से मिला मैं, अब हमको इस पर और काम करना होगा. सो देन वी सिट डाउन एंड देन वी एनालाइज दैट यूट्यूब चैनल के अच्छा कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, कौन से कीवर्ड उन्हें करना चाहिए फोकस. देन वी क्रिएट अ 1 page डॉक्यूमेंट कि अच्छा आपने इस तरह से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट, राइट. फिर हम उनको पिच करते हैं कि देखो आपका बिजनेस में हम ऐसे से हेल्प कर सकते हैं, ये आपका कीवर्ड है, हम इस पर हेल्प करेंगे बनाने में ऑर्गेनिक कंटेंट, दिस इज व्हाट वी विल डू, दिस इज हाउ मच वी विल चार्ज. फिर दे लाइक ठीक है करते हैं, मीटिंग करते हैं एक और बार. देन दे डू 1 more meeting in which we close them if they're interested. Now I know most of you are in your 20s as a student or starting out in your career, and US can be expensive. I myself used to save every rupee I can when I was in college. I know many of you do not have businesses which you can do sales for in the US, and that's okay. If you're genuinely smart in tech or business, there are ample of companies and events who would love to invite you to the States. Ritesh Agarwal did it. Ayush Jaiswal did it. Search for hackathons, research professors, tech and marketing events. You can figure it out. Your US trip could just be a few emails away. You just need to, first of all, find what you're interested in. Could be AI, tech, medicine, finance. Find out who are the biggest people or companies in the US in these fields and just start emailing them. Just a simple habit of emailing 10 people every day can literally change your life and the opportunities you can unlock. A lot of these VC funds also run residency programs where they invite you to spend some time in the Silicon Valley. I met plenty of 18-year-olds, 20-year-olds who came from India and are now under these residency programs in Silicon Valley building what they are interested in. I think every 20-year-old should travel to the US once in their life. I'm gonna go again by the year end and can't wait to document it. But I think दोस्तों के बिना ना मज़ा नहीं आता. I'm super thankful to all the friends I made on this trip. Adit, Sakshi, Umang, Ruchi, Pranav, Puneet, and many more. Thank you so much for making this the most memorable 45 days of my life. And to Apple for inviting me for their iPhone 16 launch event. I got to meet MKBHD, Arun from Mr. Who's the Boss, Technical Guruji, and of course, visit the Apple Park. Standing in front of the Steve Jobs Theater, holding the iPhone 16 before anyone else. It felt like a dream. I got to shoot podcasts with founders of the world's biggest AI startups, visited offices of Google, Meta, YouTube, met my biggest mentors, Gary Vee, Chris Do, and Quincy Larson.
Lastly, I want to thank Virgin Atlantic for the entire experience on my way to the US. My trip was all about meeting founders and entrepreneurs and learning about business and technology. One entrepreneur I have huge respect for is Sir Richard Branson and how he built Virgin. He started Virgin Atlantic exactly 40 years ago all by himself, and I became a huge fan of their hospitality and attention to detail. Be it their premium economy or the upper class or their clubhouse at the London Heathrow. That was my US trip. Drop any questions in the comments below and subscribe for more.